What if I told you there is a path that cannot be spoken, a name that cannot be named? This is the mystery of the Tao. It's not a god you pray to. It's not a set of rules you must follow. Think of it as the natural flow of the universe. It is the silent rhythm that makes the sun rise and the rivers flow to the sea. It is the ultimate source of everything, yet it claims nothing for itself. It is the great, unseen, and unspoken reality that connects us all. We don't create this flow, we are a part of it. The real question is, are we fighting against it, or are we learning to move with it? It's a simple question with a very deep answer. Many of us spend our lives chasing things. We chase money, fame, and power. We believe these external things will bring us happiness, but the Tao Te Ching teaches us something different. It tells us to look inward, not outward. True peace and contentment are already inside you. The Tao is like a deep well within your soul. The more you try to fill it with things from the outside world, the emptier it feels. But when you become quiet, when you stop chasing, you realize the well is already full. It is full of peace, simplicity, and a quiet strength that no one can ever take away from you. The Tao guides us toward simplicity. In a world that constantly screams for more, the Tao whispers, less is more. It asks us to let go of our complicated desires and unnecessary ambitions. Think about nature. A tree doesn't try to be the tallest, it just grows. A river doesn't try to be the fastest, it just flows. This is the essence of living in harmony with the Tao. It is about finding beauty in the ordinary and strength in gentleness. It teaches that being soft is not a weakness. It is a sign of resilience. Water, which is soft, can carve through the hardest rock over time. So, the journey into the Tao Te Ching is not about learning new and complex ideas. It is a journey of unlearning. It is about letting go of the ego, the stress, and the constant need to control everything around us. It is about returning to our true nature, which is simple, peaceful, and powerful. It's a path back to yourself. It's a reminder that you don't need to struggle to find your way. The way is already here. It is all around you, and most importantly, within you. You just need to stop, listen, and feel it. Are you ready to begin this journey? The journey begins by understanding that the true Tao is eternal and cannot be defined with words. As we move forward, we learn that seeing beauty also creates the idea of ugliness. They are two sides of the same coin. The wise lead by emptying minds and filling bellies, not by creating desire. The Tao is like an empty bowl. Its use comes from its emptiness, not its fullness. It reminds us that heaven and earth are not sentimental. They treat all things impartially, like straw dogs. The spirit of the valley never dies. It is the mysterious feminine, the root of existence. The universe is eternal because it doesn't live for itself. True goodness is like water. It benefits all things without competing. It is better to stop filling a cup when it is full than to let it overflow. Can you hold your soul and embrace the one without separation? We are taught that 30 spokes share the wheel's hub, but it is the center hole that makes it useful. Too much color blinds the eye, and too much music deafens the ear. The greatest leaders are those whose existence is barely known by the people. When the great Tao is forgotten, goodness and morality appear as forced concepts. We must abandon holiness and wisdom, and the people will be 100 times happier. The path is to be simple, embrace the uncarved block, and have few desires. Those who stand on tiptoe cannot stand firm. A whirlwind does not last all morning, nor a downpour all day. This is the way of nature. There is something formless yet complete that existed before heaven and earth. It is the mother of all things. Heavy is the root of light, and the still is the master of the restless.
a good traveler leaves no tracks. Knowing the masculine but keeping to the feminine becomes a channel for the world. To try and control the world is a futile effort. The world is a sacred vessel that cannot be controlled. Weapons are instruments of fear and are not the tools of a wise person. Where armies are stationed, briars and thorns grow. The wise person achieves their goal and then stops. They do not use force to dominate. The Tao is forever undefined, small but unconquerable. Knowing others is intelligence, but knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength, but mastering yourself is true power. The great Tao flows everywhere, to the left and to the right. It loves and nourishes all things, but does not lord it over them. The master who centers in the Tao can go anywhere without harm. What is to be shrunken must first be stretched. The fish cannot leave the deep waters cannot, and the nation's most effective tools should not be shown to others. The Tao does nothing, yet it leaves nothing undone. If a leader can hold to this principle, all things will transform themselves. A person of superior virtue is not conscious of their virtue. That is why they have it. The clarity and stillness of the Tao set the universe in order. These early chapters lay the foundation for a life of balance, humility, and profound inner peace, guiding us away from chaos and toward our own centered truth. As we venture deeper into the Tao Te Ching, the core ideas begin to echo and reinforce one another, creating a complete picture of a balanced life. The later chapters revisit the essential themes of humility, simplicity, and aligning with the natural order. We are reminded again and again that the Tao does not strive, yet it accomplishes everything. The ideas of letting go, of yielding to overcome, and of finding power in stillness are presented through different metaphors. The text emphasizes that true power isn't in aggression but in resilience. It is the soft water that wears away the hard rock. The wise person, therefore, does not push or force. They adapt, they yield, and through this flexibility, they endure and succeed effortlessly. The concept of the uncarved block appears repeatedly, symbolizing our original, simple, and pure nature, before society imposes its complex labels and desires upon us. To return to the Tao is to return to the state of pure potential. This means letting go of the need for status, fame, and intricate knowledge that only serves the ego. The later chapters guide us to find contentment in what we have, right here and now. They teach that the person who knows they have enough is truly rich. This is a radical idea in our modern world, which is built on the foundation of constant wanting. The Tao shows us a different kind of wealth. The Chi Wa rich of a peaceful heart and a simple life. Leadership is another recurring theme, but it's a form of leadership that looks very different from our usual understanding. A Taoist leader governs with a light touch. They trust the people and the natural process of life. They do not overmanage, over-legislate, or over-control. Instead, they create an environment where people can thrive naturally. Like the best gardeners, they provide the right conditions, but let the plants grow on their own. This leadership is based on service, not domination. The leader puts themselves last, and in doing so, finds themselves first. This paradoxical wisdom is a cornerstone of the later chapters, showing how to lead with grace and effectiveness. Finally, the closing sections of the Tao Te Ching bring us to the ultimate wisdom. True words are not always beautiful, and beautiful words are not always true. The wise person does not need
to argue or prove their point. They live their truth quietly and confidently. The text concludes by reinforcing the idea that the way of the Tao is to benefit all beings and never to harm. It is a message of profound compassion and interconnectedness. The cycle is complete. From the mystery of the indefinable Tao in the beginning, we arrive at a simple, actionable truth. Live simply, act kindly, and trust the natural flow of life. एक सबसे शक्तिशाली विचार जो ताओ ते चिंग में मिलता है वह है वू वेई। इसे अक्सर निष्क्रियता या प्रयासहीन क्रिया के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप आलसी बन जाएं या बिल्कुल कुछ भी न करें। जरा सोचिए, क्या कभी आप किसी गतिविधि में इतने डूब गए हैं, जैसे पेंटिंग करना, संगीत बजाना या बस प्रकृति में चलना, कि ऐसा लगता है जैसे आप नहीं बल्कि वह क्रिया ही अपने आप हो रही है। सब कुछ बिना प्रयास के सहज रूप से बहता है। यही है वू वेई। यह है प्राकृतिक प्रवाह के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में कार्य करने की कला। बिना किसी संघर्ष या प्रतिरोध के ये धारा के साथ तैरना है, उसके खिलाफ नहीं। यह वह अवस्था है जहां आप कम करके ज्यादा हासिल करते हैं, क्योंकि आपके कर्म ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल में होते हैं। ये सिद्धांत हमारे जीवन के हर हिस्से में लागू होता है। अपने काम में वू वेई का अर्थ है परिणामों को जबरदस्ती न थोपना, बल्कि समाधानों को स्वाभाविक रूप से उभरने देना। इसका मतलब है कि आप केंद्रित और उपस्थित हैं, लेकिन तनावग्रस्त या चिंतित नहीं, पाउडर नहीं। जब आप वू वेई की अवस्था में होते हैं तो आपके प्रयास आपको थका नहीं देते बल्कि ऊर्जा देते हैं। ये ठीक वैसे है जैसे कोई कुशल नाविक नदी से संघर्ष नहीं करता बल्कि उसकी धाराओं और भंवरों का उपयोग करता है। वह अपनी ऊर्जा पानी के साथ लड़ने में बर्बाद नहीं करता, बल्कि वह नदी की प्रकृति को समझता है और उसके साथ काम करता है। यही है चरम प्रदर्शन और स्थायी सफलता का रहस्य, बिना थकावट के। ये व्यस्त रहने की बजाय प्रभावी होने के बारे में है। वू वेई लाओ जू की शिक्षा के अनुसार सच्चे नेतृत्व की भी नींव है। एक ऐसा नेता जो वू वेई का अभ्यास करता है, उसे अपने लोगों पर हर बात थोपने या सूक्ष्म प्रबंधन की जरूरत नहीं होती। वह उदाहरण, विश्वास और सशक्तिकरण के जरिए नेतृत्व करता है। ऐसा वातावरण बनाता है जहां लोग अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकते हैं। जरा सोचिए आपके जीवन में सबसे अच्छे कोच के बारे में। उन्होंने शायद कभी चिल्लाकर हर कदम नहीं सिखाया होगा, बल्कि उन्होंने सही परिस्थितियां बनाई, सही मार्गदर्शन दिया और फिर आपको खेलने के लिए छोड़ दिया। ऐसे नेता इतने प्रभावशाली होते हैं कि जब कार्य पूरा हो जाता है लोग कहते हैं हमने ये खुद किया। उनकी उपस्थिति सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली होती है, जैसे पहिए का केंद्र जो सब कुछ जोड़कर रखता है लेकिन आवाज नहीं करता। वू वेई का अभ्यास करने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अहंकार ही हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें सब कुछ नियंत्रित करना है, अपनी राह थोपनी है और अपनी अहमियत साबित करनी है। यही अहंकार संघर्ष और प्रतिरोध पैदा करता है। सहज जीवन जीने के लिए हमें अपने अहंकार को शांत करना और एक गहरी बुद्धिमत्ता, ताओ की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना सीखना होगा। यह स्वीकार करने की विनम्रता है कि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हैं और जीवन को अपने ढंग से अनफोल्ड होने देने की समझदारी। इसी समर्पण में हमारी सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। वू वेई कोई निष्क्रिय स्वीकार्यता नहीं है, ये जीवन के साथ सक्रिय और गतिशील तालमेल है। एक ऐसा नृत्य जिसमें हम ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह तालमेल में होते हैं। आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण दुनिया में ताओ ते चिंग की प्राचीन बुद्धिमत्ता पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो व्यस्त रहने, शोर मचाने और लगातार जुड़े रहने को बढ़ावा देता है। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम और ज्यादा, अधिक सफलता, अधिक संपत्ति, अधिक अनुयायी का पीछा करें। लेकिन यह दौड़ हमें अक्सर खाली, चिंतित और खुद से तथा प्रकृति से कटे हुए महसूस कराती है।
ताओ एक शक्तिशाली समाधान प्रस्तुत करता है। यह हमें धीमा होने, शांत रहने और भीतर झांकने का निमंत्रण देता है, ताकि हम वहीं शांति और संतोष पा सकें जिसकी हमें तलाश है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा संतोष और तृप्ति अधिक पाने से नहीं बल्कि कम की आवश्यकता से मिलती है। यह सादगी की ओर लौटने का आह्वान है। आज ताओ को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़कर किसी गुफा में जाना होगा। ये इसके सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में लाने की बात है। अपने काम में माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, व्यस्त दिन में शांत क्षण तलाशना और अपने व्यवहार में करुणा को चुनना, यही ताओ का सार है। इसका मतलब है कि आप बोलने से ज्यादा सुनना सीखें। इसका मतलब है कि उस दुनिया में कोमलता दिखाने का साहस रखें जो अक्सर आक्रामकता को महत्व देती है। यह समझना है कि आपको हर बहस जीतने या हर स्थिति को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति झुकने, छोड़ देने और प्रक्रिया पर भरोसा करने में ही होती है। ताओ हमें सफलता और असफलता के साथ एक स्वस्थ रिश्ता भी सिखाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां जीतना ही सब कुछ माना जाता है। ताओ याद दिलाता है कि जीवन उतार चढ़ाव का चक्र है। जैसे दिन रात में बदलता है और सर्दी वसंत में, वैसे ही हमारे जीवन में भी विकास और विश्राम के दौर आते हैं। इस प्राकृतिक लय को स्वीकार करके हम खुद को हमेशा शीर्ष पर रहने के दबाव से मुक्त कर सकें। जीत और हार दोनों में गरिमा से रहना सीखते हैं। आज के समय में यह लचीलापन एक सुपर पावर है। यह हमें चुनौतियों का सामना शांत मन और अडिग आंतरिक शक्ति के साथ करने देता है, ये जानते हुए कि यह भी बीत जाएगा। आखिरकार ताओ ते चिंग एक अधिक प्रामाणिक, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। ये कोई धर्म नहीं है जिसे पालन करना है, बल्कि एक दृष्टिकोण है जिसे अपनाना है। यह हमसे कहता है कि हम अपने आप, दूसरों और प्रकृति के साथ तालमेल में रहें। इसकी बुद्धिमत्ता कालातीत है क्योंकि यह मानव अनुभव के मूल को संबोधित करती है। ये हमें दिखाती है कि एक साधारण जीवन में भी असाधारण शांति कैसे पाई जा सकती है। ताओ की यात्रा दिल का एक शांत विद्रोह है। ये वह साधारण लेकिन गहरा एहसास, एहसास की सबसे महान यात्रा वही है जो आपको आपके अपने शांत, शक्तिशाली और शांतिपूर्ण केंद्र तक वापस ले जाती है।